Hello, good afternoon, assalamu alaikum and welcome to the Pavilion. मैं हूं फखर-ए-आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स एंड द ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023. और सूरत हाल ये है कि मामलात अब बिल्कुल आखिरी मैचेस की तरफ पहुंच गए हैं. बिफोर वी गेट इनटू द नॉकआउट स्टेजेस, 3 टीमें सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं. इसके बारे में भी बात करेंगे. But let me bring in my 4 esteemed guests into the conversations. I've got 4 former Pakistani captains, 4 outstanding minds of cricket, 4 gentlemen who have been with us throughout this journey of the World Cup. I've got first up Shoaib Malik. Good afternoon, assalamu alaikum, Shoaib. Good afternoon, walaikum salam, assalamu alaikum. Second up, I have Misbah. Good afternoon, assalamu alaikum, Misbah. Good afternoon, assalamu alaikum. With us also, I've got the silver fox of the pavilion, Moin Khan. Assalamu alaikum and good afternoon, Moin. Good afternoon, assalamu alaikum, everyone. And finally, Fakhar-e-Pavilion, the man, the royalty, we all know, the Sultan of Swing, the king of all-rounders, Wasim Akram. Good afternoon, assalamu alaikum, Wasim. Good afternoon, ji, assalamu alaikum, everyone. कल आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 के अंदर एक और मुकाबला था. इट वाज इंग्लैंड वर्सेस नेदरलैंड्स और इंग्लैंड जिसको 5 लगातार डिफीट्स के बाद कल एक विक्ट्री मिली. आइए जरा नजर डालते हैं मैच समरी के ऊपर. इस तरह सूरत हाल हुई कि कल इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की. एक वक्त पे लग रहा था कि नेदरलैंड्स ने इंग्लैंड को फंसा लिया, मगर ऐसा ना हो सका. एक जबरदस्त पार्टनरशिप हुई और बेन स्टोक्स ने एक शानदार सेंचुरी जो है वो कल बनाई है. 339 for 9, that was England in 50 overs. Dilade picking up 3 wickets, Dutt also picking up 2 wickets, and so did Verbeek. In response, Netherlands were bundled out for 179. Teja ne 41 runs अच्छे स्कोर किए. Scott Edwards also with his 38. Ali there picking up, Moin Ali, his first wickets in this World Cup. 25 ओवर उन्होंने खाए थे इससे पहले इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर. This is the first time he got any wickets. 3 for 42. In the end, England won this one by 160 runs. A win that they desperately needed. इसके साथ ही आइए नजर डालते हैं पॉइंट टेबल के ऊपर. आज सुबह पॉइंट टेबल पे सूरत हाल क्या है ये रही आपके सामने. पॉइंट टेबल पे 3 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं सेमीफाइनल के लिए. सबसे पहले इंडिया 8 मैचेस खेले हैं, अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है इंडिया इस वर्ल्ड कप में. 16 पॉइंट्स के साथ they've played some incredibly fantastic cricket and that's why they sit right on top of that table. Number 2 is South Africa. Also played really good cricket. 2 मैचेस हारे जरूर हैं मगर 12 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन पे. नेट रन रेट भी इनका जबरदस्त रहा है थ्रू आउट. ऑस्ट्रेलिया द थर्ड टीम दैट क्वालिफाइड और इन्होंने भी 12 पॉइंट्स के साथ अपनी पोजीशन हासिल कर ली है. नाउ the match is open, the game is open, the spot is open. It is New Zealand, Pakistan, Afghanistan that are in the hunt for that 4th semi-final spot. न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीनों के 8-8 पॉइंट हैं और तीनों के एक मैच जो है वो बाकी है. सो ये सूरत हाल अब हमारे पास क्लियर हो जाएगी अगले कुछ दिनों में कि हु इज गोइंग टू बी द 4th टीम टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल. बट लेट्स टॉक अबाउट yesterday's game for a bit. England finally scoring a win, Wasim. Ben Stokes coming into the party with that century. They must have been thinking after yesterday's performance कि ये सब कुछ हम पहले भी कर सकते थे. This could have happened a little earlier in this tournament. I was listening to Ben Stokes' press conference after his 100. I think he was man of the match. So he said something, you know, that girl, the lady reporter asked him कि आपके ख्याल में कुछ, you know, question was कि आपके ख्याल में आप लोगों को पता नहीं था कि combination, something like very difficult question, and his answer was very straightforward, three-liner answer. We played crap cricket. That's what he said. He himself admitted it. And Moin का आपने सुना होगा 2 दिन पहले उसने भी interview दिया है. And I was listening to Ian Ward and Morgan as well on Moin's interview. He said कि, you know, I think this team had his time. It's time to pump in next fresh blood into it. And Morgan said I agree with him. So obviously that was an issue. वो जीते भी हैं तो लेट जीते हैं. Now pride / they can qualify for the Champions Trophy. But in the end, yeah, win is a win, I suppose. But again, they're not in the semi-finals. The favorites are gone. Yeah. मोइन कितनी ज़बरदस्त बात है कि एक तो प्लेइंग 11 के एक मेन प्लेयर जिन्होंने सेंचुरी गाड़ी है वो ये कह रहे हैं कि हमने बड़ी बुरी क्रिकेट खेली, क्रैप क्रिकेट, बहुत ही बुरी क्रिकेट हमने खेली है. और दूसरा मोइन अली जैसे सीने कह रहे हैं कि हमारा वक्त अब हो गया है नया ब्लड लाने के. यानी कि आपको पता है कि दुनिया के दूसरे खित्तों में खासतौर पर पाकिस्तान में काफ़ी कुछ लोग जो हैं वो तो डिनाइल में चले जाते हैं. नहीं ये नहीं हुआ था. वो एक्सक्यूजेस बताना शुरू कर देते हैं कि नहीं इस वजह से हुआ था, उसने ये कर दिया, हमारे साथ ये हो गया, मैनेजमेंट ने हैंड कर दिया, फलां ने ये कर दिया. और सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो नहीं होती. बट हियर वी कैन सी द इंग्लिश एग्जाम्पल. आई थिंक देखिए सबसे पहले जब भी आप इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो सेल्फ असेसमेंट ही बेस्ट चीज़ होती है. जब तक आप सेल्फ असेसमेंट नहीं करेंगे तो आप आगे बढ़ नहीं सकते.
उन्होंने रियलाइज़ किया वाकई नॉट ओनली हिम और बेन स्टोक्स बट पूरी टीम एज अ टीम ही वाकई वो इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली जिस तरह ट्रेंड सेटर थे 2015 ऑनवर्ड, जिस तरह वाइट बॉल क्रिकेट में इंग्लैंड खेली है थ्रू आउट। आई थिंक कि वो जो एक्सपेक्टेशंस थी तमाम लोगों की फॉलोअर्स ऑफ द गेम बिल्कुल उस पर पूरा नहीं उतरे। आई थिंक वो रियलाइजेशन हो गई तो नेचुरली अब यहाँ से एक ऑनवर्ड फ्रेश ब्लड की ज़रूरत है। हमने देखा कुछ प्लेयर्स को नहीं लेके आए थे, कुछ प्लेयर्स ने वनडे मैचेस मिस किए थे बिफोर दिस वर्ल्ड कप यू नो। फिर जेसन रॉय जो खेले हुए थे बहुत ज़्यादा मैचेस एंड उनको होना चाहिए था मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वनडे पिछले दिनों में उन्होंने खेले हुए थे। तो आई थिंक ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंग्लैंड एक जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि कप्तान ने भी परफॉर्म नहीं किया। जिस टीम का कप्तान परफॉर्म ना कर रहा हो तो नज़र आता है, उसका रिफ्लेक्शन पूरी टीम पे पड़ता है। और हमने थ्रू आउट द टूर्नामेंट या जॉर्ज बटलर की जो है बॉडी लैंग्वेज देखी हो, बिल्कुल ही डाउन थे, उनसे रन्स भी नहीं बने। जिस तरह का फ्लेयर रखते हैं वो बैटिंग के अंदर यू नो बहुत ही एग्रेसिव, कहीं भी नज़र नहीं आया वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि कप्तान से परफॉर्म नहीं हुआ। Right, Misbah. So clearly, an era is coming to an end in English cricket. What would be the greatest trait of this era's legacy? One greatest trait of this era's legacy. देखिए the kind of cricket they played, जो दुनिया को दूसरी तरफ लेके गए हैं, एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिकेट की तरफ लेके गए हैं। दैट वाज बेसिकली द ट्रेंड विच इंग्लैंड टीम बेसिकली सेट फॉर अदर्स। बेंचमार्क एक बना लोगों के लिए, 350, 450 उस किस्म की क्रिकेट खेलना, टेस्ट क्रिकेट में जैसे खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोई भी टीम स्किल आपका 1-2 वीक में नहीं जाता कहीं पे भी कि बंदा कहे कि यह स्किल नहीं था इस टीम के पास, ये कैपेबल नहीं थे या अभी भी नहीं है। दे आर, इट्स ऑल अबाउट माइंड। सारे डाउट्स यहाँ पे आते हैं। वो जो डाउट्स आए हैं उनके पहले मैच के बाद उसको वो रिकवर नहीं कर सके। वो बीच में आप कहते हैं कि हमने ये वाला ब्रांड खेलना है या हमने नॉर्मल क्रिकेट खेलनी है, उसके बीच में कहीं फंस गए। और जब फॉर्म जाती है तो वो जाती इसी तरह, सबसे पहले आपके डाउट्स आते हैं माइंड में और वो आपका माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो जाता है। आप सोचते कुछ हैं, करना कुछ चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो बीच में माइंड आपको रोक देती है। तो यही हुआ है इनके साथ, थोड़ी सी फॉर्म आगे पीछे हुई, परफॉर्मेंसेस नहीं हुई एंड देन दे जस्ट वेंट इनटू द शेल। मुश्किल मैच आ गया, दैट हैपेंड एंड सडनली नंबर 1 टीम जो हम सारे, मेरे ख्याल में यहाँ जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे कहीं पे भी, सब ने सेमीफाइनल्स में सबसे पहली टीम हमने इंग्लैंड लिखी थी। जी हाँ, we all did. And that happens. That's how how cricket it is. is. Well, at least good news for them is they're not at the bottom of the table anymore. When they go into this rebuilding, अब rebuilding के phase में जाएंगे शोएब, इंग्लैंड की टीम, will they go in keeping baseball as they call it, baseball, whatever they call it? Is that how they're going to go into the rebuilding phase? Yeah, they will have to abandon that thought process and rebuild a different ideology and create a new team. आई थिंक दे शुड नॉट अबेंडन दैट फैक्ट जो ब्रेंडन लेके आए हैं बेसबॉल, उसको उसी में ये चीज़ ढूंढनी पड़ेगी कि अगर तो थोड़ी सी कन्वेंशनल क्रिकेट खेलने वाली कंडीशंस आ गई तो उसमें कौन सा प्रोसेस जो है वो हम लोगों ने अडेप्ट करना है। और आई गेस ये दिस इज़ प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे शुड फाइंड अ वे कि अगर ऐसी कंडीशंस आ जाएं जहाँ पे थोड़ी कन्वेंशनल क्रिकेट या थोड़ी पार्टनरशिप्स लगाने वाली, जैसे इस वर्ल्ड कप में जो मिसिंग पार्ट मुझे नज़र आया, वो करने के लिए उसी में वो निकालना पड़ेगा। बिकॉज वो इसलिए कि दे गॉट सक्सेस उसी वजह से, और दे शोड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि ऐसे क्रिकेट खेली जाती है। तो मेरे ख्याल में उसके अराउंड ही रहना चाहिए, लेकिन वो देखना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, ठीक है, दिस टीम नीड्स फ्रेश ब्लड, बट उसके साथ जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो कुछ अच्छे लोग ज़रूर होने चाहिए। वो इसलिए होने चाहिए कि वो एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, क्योंकि जो न्यू ब्लड है उसका सीखने का जो प्रोसेस होता है वो फास्टर होता है कि अगर उनके साथ जो उन हर्डल्स में से, टफ सिचुएशन में से जो मैच विनर्स हों वो उनके साथ हों, वो उनको राइट गाइडेंस दे सकें। All right, and with that we're going to take a break here on the Pavilion, but when we come back we get closer to the action today. Welcome back to the Pavilion. आप देख रहे हैं Sports and Sports on the ARY Zap app, and we were talking about the English cricket team. Wasim, you had a couple of questions that you wanted to ask. Yes. Yeah, Shabi, my question to you all three, my panelists से है कि उनके 2 कोचेस हैं, वाइट बॉल में मॉट है और रेड बॉल में ब्रेंडन मैकलम है।
काफ़ी लोगों का ख्याल तो नहीं था, आइडिया था, नॉट नाउ बट आई एम टॉकिंग ईयर अगो 2 years ago, कि ये सिस्टम क्या हमारे कल्चर में चल सकता है? 2 different coaches. Misbah, you have been coach, Moin have been coach. I think वसीम भाई, अगर मेरा ख्याल है कि टीम्स अलग अलग हो दोनों फॉर्मेट्स की, तो फिर तो आप कैरी कर सकते हैं। सारी तो अलग नहीं हो सकती, बट सर्टन प्लेयर तो दोनों टीमों में आते हैं। बट एक आइडिया है, आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स कि आप आपकी अपनी प्लानिंग क्या है, क्या विजन लेके आप 2 कोचेस को लेके आ रहे हैं। इट ऑल डिपेंड्स। आई थिंक टेस्ट क्रिकेट में नेचुरली आपने अगर रखा हुआ है यहाँ पे, तो नेचुरली उसका एक बैकग्राउंड है, एक तजुर्बा उसको देख के रखा है, एक न्यू इन्वेंट की, एक एक नया कहना चाहिए कि कल्चर दिया है क्रिकेट के अंदर आके, तो आप आप कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करने में कोई हर्ज नहीं है, बट नई चीज़ें इन्वेंट ही उस वक्त होती हैं जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। सॉरी, आई हैव अ डिफरेंट व्यू। आई डाउट कि हमारे कल्चर में ये चल सकेगा। एम आई राइट? ये एक अलग सवाल है कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं, डिफरेंट जो है इंटरेस्ट, एंड देन एक आप पेज पे नहीं होते, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। मेरे ख़्याल में अगर आप स्पेशलाइज जाना चाहते हैं और डिफरेंट सोच लेके आना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि फोकस करें सारी एनर्जी एक तरफ आपके कोचेज़ या स्टाफ, तो ये कर सकते हैं आप, और ये आपका जो है वो सक्सेसफुल मॉडल हो सकता है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, फिर आपका सिस्टम उनको सपोर्ट करे उसी तरह, वो अपने अपने रोल्स में रहें, कोशिश करें वो जो भी सोच लेके आए वाइट बॉल क्रिकेट में। अब देखिए इंग्लैंड की मिसाल सबके सामने है कि वो बिल्कुल एक डिफरेंट सोच के साथ रेड बॉल वो अलग तरीके से खेल रहे हैं, वाइट बॉल में वो डिफरेंट उनकी अपनी प्लानिंग है, तो वो आप उसको बिल्कुल ये कर सकते हैं। लेकिन फिर आपका जो मेन पीछे है वो आपका पूरा क्रिकेट बोर्ड है या सिस्टम है कि उसको किस तरीके से आप स्ट्रॉन्ग रखते हैं, कैसे सपोर्ट करते हैं उन सबको आपस में। फिर ये नहीं है कि राइवलरी एक स्टार्ट हो गई है, नया ही काम शुरू हो गया, वो नहीं होना चाहिए। इसमें कैप्टन भी 2 डिफरेंट होने चाहिए। अगर दो डिफरेंट कोचेज हैं तो मेरे ख्याल में कैप्टन्स जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। वाइट बॉल का डिफरेंट होना चाहिए, रेड बॉल का डिफरेंट होना चाहिए। नहीं, वैसे बेहतरी आ सकती है। Ben Stokes is a test captain, am I right? Test and captain. Butler is the white ball captain. Before we go on, I must say guys, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜਾਕੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੋਇਨ ਲੈਰੀ ਗੋਮਜ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। The West Indian blazer color today, the Caribbean blazer. We definitely miss the West Indies team in this World Cup, you know. Yeah. And we would definitely like coolness. to see. Yeah. They were cool in the 80s, 90s, 2000s. And of course, when they won the T20 World Cup, but they're not cool anymore, unfortunately. Cricket-wise. Proactive रहना पड़ेगा। वेस्ट इंडीज़ नहीं है 50 ओवर वर्ल्ड कप में। वी नेवर थॉट ऑफ not seeing West Indies team not participating in white ball cricket. And they have a different flair of cricket. You know, they bring something different on the table. और इंग्लैंड जो है वो भागम दौड़ में लगी हुई है, being number 1, और उसके बाद भाग दौड़ में लगी हुई है कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में we have to finish in the last 8. Yeah. मतलब things are changing. Another question, qualification. आप तो अपनी राय तो देना पहले इसके ऊपर, 2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 2 कप्तान मेरा नहीं ख्याल हमारे कल्चर में, it'll be a big mess in my opinion. Yeah. Because leadership जैसे मिसबा ने कहा उसका नहीं पता, कंसिस्टेंसी है नहीं। अब जैसे चेयरमैन है हमारे, जो भी आते हैं, जो भी आएंगे आगे, 3-3 महीने की एक्सटेंशन मिले कोई भी काम नहीं कर सकता। It's not fair on them as well. You know, so yeah, in my opinion, it won't work here. It won't. Well, just one more parting word for the West Indies. The 2024 T20 World Cup is partly in the United States of America and the rest in the West Indies, and we hope that this will inject a new vigor in the youth of the West Indies, the Caribbean islands, to go back and embrace. Another question, sorry, changing the subject, quick one. ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो क्वालिफिकेशन है टॉप 8 की, वंस दे डिसाइडेड कि कौन सी 8 टीमें आएंगी और नहीं ऐड हो सकती ना, क्वालिफाई राउंड नहीं है। देयर इज नो क्वालिफायर्स, बट स्टिल हम मदर से पूछ सकते हैं, बट आई डोंट थिंक इज देयर एनी क्वालिफायर्स, क्योंकि वर्ल्ड कप हो तो उसके लिए क्वालिफायर्स होते हैं। एक तो होस्ट टीम रहती है, होस्ट टीम को क्वालिफाई नहीं करना होता। That's again doesn't make any sense. Yeah, it doesn't make any sense. What's the point if you're finishing in top 8 and realize कि होस्ट टीम तो नंबर 9 होते हैं, वो अपने आप क्वालिफाई कर जाएगी? That doesn't make any sense. So I think
Nazar will be able to tell us more. And again, changing the subject back to the West Indies. Yeah. We hope that the next year's World Cup, the 24 T20 World Cup in the United States of America and in the Caribbean is going to inject new vigor in the youth of the Caribbean islands and get these kids to, embrace cricket one more time. We're going to talk about that in the days ahead as we move forward. But आइए जरा नजर डाल लेते हैं आज आपके लिए क्या है in store for us here at the ICC Men's World Cup is New Zealand versus Sri Lanka from Bengaluru. This is a very important match. It has a lot of significance. और अब से कुछ देर बाद ये मैच बराह रास्त आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे. Now, what is the significance of this game? Well, the significance is that ये जो चौथा डिसाइड होना है कि कौन सी टीम चौथी टीम होगी जो सेमीफाइनल खेलेगी, उसके हवाले से ये मैच बहुत ही वाइटल है और पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. या पाकिस्तान के लिए तो वी ऑल नो इम्पॉर्टेंट है एंड दैट्स व्हाई वी डिड अ रेन डांस बिफोर द थिंग बिफोर द शो स्टार्टेड. बट जो सिनारियोज हैं फॉर न्यूजीलैंड, let me explain that. New Zealand best chances, they beat Sri Lanka and then hope Pakistan and Afghanistan do not win their matches by a big margin. And for Pakistan best chances, Sri Lanka beat New Zealand or this match is washed out, then Pakistan beat England and then Pakistan qualifies. If Pakistan scenario comes down to net run rate, they will need to beat England by at least 130 runs or chase in 28 overs. इसका मतलब ये है कि न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के लिए ज़्यादा आसान है टू गो इन द लास्ट फोर एज कम्पेयर टू पाकिस्तान. इसीलिए जल्दी जानमाज निकालो. अफगानिस्तान का बेस्ट सिनारियो भी है because the three teams fighting for one spot. New Zealand and Pakistan lose their matches and then Afghanistan beat South Africa. Yeah, and they go straight to the semis. So yeah, there are 3-4 kind of ways, 3 teams, 1 spot. So that's interesting for the World Cup and of course हम चाहेंगे कि पाकिस्तान टीम आए. अफगानिस्तान वाले अभी जाने माना नहीं निकलेंगे. We are going to take a break here at the Pavilion. When we come back, we're closer to the action. Stay with us. Hello and welcome to the Pavilion. You're watching A Sports and Sports in the Airwise app. And guess what, Wasim? It's time for your favorite bit, and that's the pitch report brought to you by Colgate GRF. Well, there you have it, Wasim. What do you think? Pitch looks really good. हमने देखा है कि बैंगलोर की pitch पे it's played kind of 2 different scenarios, but over and all it's a really good pitch. Sanjay nailed it. It's a bowling horror pitch. छोटी boundary है, 65-66 meter either side, and you've seen big scores in this World Cup in Bengaluru. It's a beautiful ground, beautiful venue. I hope it rains. Came out wrong. मुझे लगता है हमें तो ये समझ आई कि दुआ चेंज करनी पड़ी है. दुआ चेंज करनी. क्यों? रेन की रोक के तो अब श्रीलंका के लिए करनी पड़ेगी. Yeah, let's do Sri Lanka dance then. Sri Lanka wind dance. Sri Lanka dance? Is there a Sri Lanka dance? There is a very Sri Lanka I don't know about the rain dance because Moin never showed us, but maybe the Sri Lanka dance Moin is aware of. उसके लिए you need a mask and a dhoti, I reckon. Okay, I had no idea. They do wear masks. I'm sure we'll find out. उनके लिए धोती तो बहुत ज़्यादा कपड़ा चाहिए होगा. All right, thank you, Shoaib. Let's talk about the cricket now that we have in hand. Let's talk about Team Sri Lanka because we want Team Sri Lanka to perform really well. देखो श्रीलंकन टीम के साथ फखर टीम 2 चीज़ें हो सकती हैं. ये वो बात करो जो नजूमी करता है 50-50 वाली. यहाँ तो वो बहुत फाइड अप होंगे आफ्टर द लास्ट इंसिडेंट्स बिकॉज दे हैड टू फाइट टू कीप द प्लेस इन टॉप 8 और यहाँ उनकी बिल्कुल फूक निकली होगी. अब I don't know which one will turn up today. ये वही है. Let's see. Let's find out. या तो स्पिन होगा या नहीं होगा. Exactly. दोस्तों आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इतना लंबा वर्ल्ड कप है कि हमारे एक्सपर्ट्स में वो हल्के से जो है ना बुगला गए हैं सारे के सारे. हल्के से या हल्का इज एन अंडरस्टेटमेंट. नहीं बुगला नहीं गए, बौंतर गए. हम ठीक है, आप पूछें. अच्छा चले मैं आपसे पूछता हूँ. आपको पता है मिसबा व्हाट्स नेक्स्ट? मुझे क्या पता है, आपको पता. तो फिर आपने क्यों बोला? आपने बोला कि पूछें. ब्रेक लेनी है ना, ब्रेक लें सर आप. तू एंजी छाला मारी जा ते अगी नसी जा. ब्रेक लेनी है. कहाँ से लेनी है ब्रेक? किसने कहा तुम्हें नहीं ब्रेक? We have a match feature for you. Let's take a look at it. एंजी बोंगी है ना हमारी अगर. All right, there you have that. Wasim, you wanted to... Reports जो बता रही हैं ऑफिशियली भी हमें जो पता लगा है वो यही लगा. The latest report suggests that umpires informed Angelo Mathews with 30 seconds were left कि भाई तुम लेट हो रहे हो. When his helmet strap was broken, he straight away signaled to the dressing room and didn't inform the umpire. When umpires came to know about the helmet issue, 2 minutes were done. Again,
like Shoaib said, अभी भी कहा इसने break में और other day भी he said कि just put a clock on. You have a massive scorecard, you have a massive clock. One gets out, put 2 minutes, 3 minutes, whatever the law is according to the MCC or ICC. फिर भी वसीम भाई कॉमन सेंस एक्सेप्शनल केस तो हो सकता है ना कि अब आप बिल्कुल बॉल फेस करने लगे और आपने स्ट्रैप टाइट करने के लिए यूं किया, जस्ट केम ऑफ। हम देख सकते हैं तो अंपायर्स भी सामने देख ही रहे, एक्सेप्शनल केस है, उसके लिए भी कोई उसने जानबूझ के नहीं किया, उसने यूं किया, ही वाज अबाउट टू फेस द बॉल। सो इतना मसला होना नहीं चाहिए, इस लॉ को ही चेंज कर अमेंड कर देना चाहिए। आई थिंक अगर 2 मिनट से ज़्यादा लेते हैं कि नॉट द पेनल्टी उसके अगेंस्ट के आपको आउट दे दिया जाए, राइट जो हम जी टाइम का दूसरी टीम को माइनस हो जाए जी, 1 मिनट 2 मिनट जितने भी होते हैं, अगर वो लेट कर रहे हैं देन श्रीलंका विल स्टार्ट। अगर वो जाते हैं बॉलिंग करने तो उनका स्टार्ट ही वहाँ से होके 1 मिनट माइनस में या 2 मिनट माइनस। आपका अगर बॉलिंग नहीं, बैटिंग में अगर देखें, बैटिंग में अगर आप टाइम वेस्ट करते हैं तो वो आपकी टीम के टाइम में से पहले था ऐसे ही कि वो आपके खाते में डलता है। इस रूल को अमेंड करके यही कर देना इसको भी उसमें। सबसे सिंपल यही है, क्लॉक लगा दें, सिंपल है, वरना हर चीज पे डिबेट होगी। उसमें ये बोलेगा सम टाइम जो फोर्थ अंपायर आता है ड्रिंक्स लेके अंपायर्स के लिए, तो अगर प्लेयर्स रेडी हैं, बैटर रेडी है, वो बोले जी अंपायर ने लेट स्टेप लिया था वायर रोप के, इसीलिए लेट शुरू हुआ। सो देयर विल बी लॉट ऑफ डिबेट्स। बेस्ट इज टू पुट अ क्लॉक। I think that's the easiest, the fastest way to rectifying it. That, yes. and then of course there could be a whole discussion on amending. Strategic time out के लिए भी Clock चलती है. Absolutely. And with that we're going to take a break here on the Pavilion. But when we come back, we're closer to the action. It is New Zealand versus Sri Lanka. We'll see you on the other side. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर-ए-आलम, आप देख रहे हैं Sports and the Airways app, and we are getting very close to a very very important game today. It is New Zealand versus Sri Lanka. और इस वक्त हमारे साथ सदीरा मौजूद है. Let's listen in. All right, there you have it. Let me ask you this, Wasim. Does Sri Lanka have the firepower in their bowling to contain this New Zealand batting lineup? Their bowling is struggling. They were relying a lot on Tikshana, who's not bowling well, who's obviously he got injured Asia Cup में, उसके बाद hamstring pull हुआ था, फिट हुआ है तो उसका वो रिदम नहीं है। एंड देन अनदर डिसअपॉइंटमेंट फॉर देम इन बॉलिंग इज जो अभी इन्होंने बुलाया है वो अपने स्क्वाड में चमीरा फास्ट बॉलर। आई मीन ही जस्ट गॉट 1 विकेट्स इन 3 games and he is their main fast bowler. And then I think this guy सदीरा, जिसका भी हमने इंटरव्यू देखा है, very good player. He got runs on and off, but he's not consistent enough in the middle order. He's such a good player, and he has been playing on and off for Sri Lanka for 6-7 years. He's about 29-30 years of age. So somebody has to score runs consistently top order. इतना टोटल अगर पहले बैटिंग करते हैं करेंगे तो फंसा सकेंगे, because मधु शंका के अलावा किसी ने इम्प्रेस नहीं किया बॉलिंग में। रंजीता probably won odd games. He bowled well. He swung the ball early on, but Madhu Shankar I think was the find of this World Cup for Sri Lankan as far as bowling concerned. Strategically, how should Sri Lanka go about their business to take on this New Zealand team? Because they look really good now. They did have a little bit of off time in between, but they're back in with Williamson coming back after the injury and looking like he was never out of the team. How do you go about containing somebody like New Zealand today? देखिए, मुझे लगता है जो बेस्ट चांस अभी भी श्रीलंका का है वो यही है कि जस्ट बॉल फर्स्ट, द काइंड ऑफ ग्राउंड इट इज़, जैसी बॉलिंग उनकी हालत है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी स्कोर डिफेंड कर सकते हैं। विकेट टेकर मिडिल में भी नहीं है, मधु शंका के अलावा ऊपर से भी कोई आउट नहीं कर रहा। वो नए बॉल से आउट करता है, फिर उसको मिडिल में लेके आता है, फिर एंड पे भी वही बॉलिंग कर रहा होता है। दूसरी तरफ से ना को फास्ट बॉलर उस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, स्पिनर को विकेट टेकिंग उनके पास ऑप्शन मिडिल में नहीं है। वसीम मैंने बिल्कुल ठीक शना भी उस तरह विकेट्स नहीं ले पा रहा। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट चांस फॉर देम। जैसे इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने पहले बॉलिंग की, सम हाउ कहीं ना कहीं वो लंबा स्कोर करने जाएं और विकेटें लूज़ हों, फंसें। एक ऐसे टोटल पे छोटी ग्राउंड है तो दे कैन जस्ट चेज इट डाउन। बैटिंग तो है श्रीलंका के पास, बट ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा एक कंसर्न उनका आ रहा है मेंडिस का। वो ही स्टार्टेड वेरी वेल इन द वर्ल्ड कप एंड देन सडनली बिल्कुल कप्तानी मिलते ही क्वाइट हो गया, बिल्कुल कोई ऐसी है। हालांकि ये ग्राउंड नॉर्मली वो स्क्वेयर ऑफ द विकेट खेलता है, उसकी जो शॉट्स हैं स्क्वेयर लेग और फाइन लेग, ये वाले शॉट्स जो उसने वहाँ पे दिल्ली में खेले थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, इस ग्राउंड में इफेक्टिव हो सकते हैं विद न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग है। स्क्वेयर ऑफ द विकेट ही इज़ गुड, बट उसको उस माइंड सेट से निकलना है भाई। कप्तानी कैन अफेक्ट योर परफॉर्मेंस। बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि
डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो जैसी कप्तानी या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो वो अपने पोटेंशियल से बेहतर खेलना शुरू हो जाते हैं। कुछ ये होता है कि वो सडनली उस तरफ सोचना शुरू हो जाते हैं तो अपनी गेम बिल्कुल उनकी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। यू शुड जस्ट गो एज अ बैटर, कप्तानी को छोड़ दें, गो देयर, इंजॉय करें अपनी बैटिंग को। और जो शॉट्स वो फ्रीली पहले खेल रहे थे अभी वो बिल्कुल डिफरेंट खेल रहे हैं। पहले मैचेस में आते ही पहली बॉल से लुक टू स्कोर रन्स, टेक ऑन द बॉलर्स। अभी वो 30 बॉलों पे 10, 15, 12, दैट मीन्स ही इज फीलिंग द प्रेशर। तो ऐसे नहीं चलेगा। Moin, so the Sri Lankan cricket board has also had a bit of an upheaval. वो पूरा बोर्ड सैक हो गया, फिर कोर्ट ने उसको रीइंस्टेट कर दिया। So वो जो ड्रामा पीछे चल रहा है बैक होम, क्या वो श्रीलंकन टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट करता है? हर प्लेयर पे करता है। जो परफॉर्म नहीं कर रहा होता उस पर एक्स्ट्रा एडिड प्रेशर हो जाता है इन चीज़ों से। जब तक बोर्ड में स्टेबिलिटी नहीं रहती, जाहिर सी बात है आपकी टीम भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाती, मुश्किल होती है। हमने टाइम देखा पाकिस्तान टीम में भी थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सीज नज़र आई हैं, प्रेशर पड़ा रहा है पाकिस्तान टीम के ऊपर, बोर्ड इधर से कुछ कह रहा है, वहाँ प्लेयर्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो नेचुरली इफेक्ट तो करता है, बिल्कुल करता है। और यहाँ हमें नज़र भी आया श्रीलंका में इतनी ज़्यादा कोई फॉर्म में नहीं है लड़के, बिकॉज वन ऑफ दी थिंग के स्टेबिलिटी क्रिकेट बोर्ड में नहीं है, बैकिंग नहीं मिलती क्रिकेट बोर्ड से जब आपको, तो ये होता है। और जो मेन चीज़ है मैं समझता हूँ कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस है इस टीम के अंदर। मोस्टली यंग क्रिकेटर्स मैं कहूँगा कि हैं यहाँ पे, और उस प्रेशर को कोप अप नहीं कर सके प्रॉपरली। शोएब, न्यूजीलैंड की टीम के अंदर अगर कोई गैप आपको नज़र आ रहा है तो कौन सा गैप है जो कि एक्सप्लॉइट किया जा सकता है आज बड़े तरीके से? देखिए, उनमें एक चीज़ है जो उनका फिफ्थ बॉलर है, फिफ्थ और सिक्स्थ बॉलर हैं, उन पे टारगेट किया जा सकता है। लेकिन वो तब किया जा सकता है जब आप अर्ली ऑन विकेट्स ना दें। फिर आपके मेन बैटर्स जो हैं ऊपर वाले खेल रहे होते हैं, तो वो जब फिफ्थ, सिक्स्थ या सेवन्थ बॉलर आता है जो कि ग्लेन फिलिप्स की सूरत में आता है या जेम्स निशम अगर आज खेलते हैं उनकी सूरत में आता है, तो उनको टारगेट किया जा सकता है। और वैसे भी उनमें इंजरीज भी हैं काफ़ी सारी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर करनी पड़ेगी कि मैच को कभी भी अपने हाथ से ना जाने दें श्रीलंका वाले, कि अगर वो पहले न्यूजीलैंड खेल रहे हैं तो ऐसा टोटल कर दें। सेकंड स्टेप, द फर्स्ट स्टेप इज टू पिक द राइट 11. They got to play extra fast bowler. They can't just go in against subcontinent teams. You've seen Pakistan ने क्या हाल किया था इनका. 25 over the 200. I mean that was exceptional. उस दिन तो उन्होंने एक स्पिनर so they have to play third fast bowler. They can't just go with 2. इसीलिए, और अगर हम लुकी फर्गसन का देखें तो उनका रिकॉर्ड भी इनके अगेंस्ट जो है वो बहुत अच्छा है। तो अब ये डिपेंड करता है कि वो आज फिट हैं या नहीं है। लेकिन लास्ट में न्यूजीलैंड ने जो मिस द ट्रिक वो ये था कि हम इतने रन्स बना देंगे कि जितना भी मारे वो नहीं पूरे होंगे। वो तो उनको क्या पता था, फखर जमान जो है वो भी जबल लोटा खा के आया हुआ है। Right, with that we're going to take a break here on the Pavilion. We'll see you on the other side. Welcome back to the Pavilion and we were talking about the Sri Lanka New Zealand game. एक चीज़ ब्रेक पे जाने से पहले हम कह रहे थे कि कौन सा वो गैप है जो न्यूजीलैंड की साइड पर एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। एंड वसीम हैड अ वेरी गुड, शोएब सेड दैट इट इज़ देयर फिफ्थ सिक्स बॉलर, चूंकि फर्गसन जो है वो नहीं है, एंड वसीम सेड दैट यू हैव टू गो इन विद द राइट कॉम्बिनेशन, बिकॉज लास्ट टाइम उन्होंने स्पिनर ले लिया था, फखर जमान लास्ट टाइम 2 फास्ट बॉलर खिलाए थे, एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाया था, बट न्यूजीलैंड को मशवरा नहीं देना कोई भी, स्पिनर खिलाना। वो तो लगता है ये स्पोर्ट्स ही देखते नहीं 24 घंटे न्यूजीलैंड डाले। वो देखे ना देखे अपने देख रहे हो या जिता रहे हैं। हाँ, वो उधर से ये भी। मैं तो चाहूंगा वो 2 फास्ट बॉलर्स ही खेलें श्रीलंका के खिलाफ, बेटर प्लेयर्स ऑफ स्पिन देन फास्ट बॉलर्स। Yep. What's the news on Nisham? Any idea? No idea. No idea. We have no. हमें सब स्टैट मिल जाते हैं स्वाई टीम के, वो जब तक रिलीज नहीं करेंगे इन्फॉर्मेशन के क्या है वो पता नहीं लगता। वैसे भी मेरा ख्याल है मैच डे पे फिटनेस टेस्टिंग होती है, जो की प्लेयर्स हों अगर वो इंजर्ड हैं या उनको निगल्स हैं। But as a player you know a night before, even day before कि okay will I be able to make it tomorrow or not? Kind of. निगल्स में I think 24 hours are still enough to assess कि आप you're fit enough to play the 50 over match. टीमों को पता तो होता है, खुद इंटरनली पता होता है ये फिट है, ये खेल सकता है कल, मोइन भाई मुझे लगता है नीशम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेयर उनके लिए लुकी फर्गसन के मैच में, क्योंकि इस ग्राउंड में और स्पेशली अगेंस्ट श्रीलंका उनका जो रिकॉर्ड है, न्यूजीलैंड चाहेगी कि वो फिट हो और वो खेले। और वसीम भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस ग्राउंड में आप 2 फास्ट बॉलर्स तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन वो फास्ट बॉलर लाइक जेमिसन को भी खिला सकते हैं, 3 एक्स्ट्रा डालें ना, बोल्ट, साउदी की जगह and Ferguson. All right, we will find out. We're going to take you now over to the stadium where both the captains are walking out with a coin, and it's time to flip, brought to you by Samsung Flip.
Well, the news out of Bengaluru is that New Zealand have won the toss and they've elected to bowl first. Wasim, your thoughts? Not a good sign for Pakistan, I suppose. एक तो लूकी फर्गसन भी fit हो गया, उन्हें भी आज ही fit होना सी. But I suppose now it's easier for New Zealand. Good toss to win, I must say. एक तो cloudy conditions है, वो बता रहा था हमने कप्तान, and weather is kind of little iffy, dodgy, and जो श्रीलंका की bowling है, जो struggle कर रही है apart from Madhushanka, अगर 350, 350 भी करते हैं, न्यूजीलैंड हैव अ चांस. लुकी फर्गसन दी एक लात भी हुंदी ते अज उन्होंने खिलाना सी. I know because उनका record incredible है against Sri Lanka in last year or two. Yeah, so this is not looking good for us. And for Sri Lanka, and for Sri Lanka, I suppose, as well. But is it like, should we just conclude that this toss has pretty much decided the fate of this game, Misbah? देखें, एक नॉर्मल सिचुएशन में लग रहा है, लेकिन एक चीज़ और भी हमें जहन में रखनी चाहिए कि कहीं ना कहीं नॉकआउट स्टेज का मैच है न्यूजीलैंड के लिए. सो अगर बड़ा स्कोर कोई 300 से ऊपर लग गया, कोई सिचुएशन ऐसी जैसे आ जाती है 1-2 आपके आउट होते हैं, तो एक लीग के मैच वाला प्रेशर नहीं होगा, उन पर प्रेशर डबल होगा. डबल प्रेशर. तो ये कि ऐसी चीज़ है जो एक्सप्लॉइट कर सकती है श्रीलंका, बट दे हैव टू पुट अ गुड टोटल. क्रेडिट भी देना चाहिए न्यूजीलैंड की टीम को कि इतने सारे सिनारियोज हैं टू क्वालिफाई इन द लास्ट 4 मस्ट विन गेम. स्टिल मैच जीतने के लिए वो गए कंडीशंस को दिमाग में रखते हुए. सो दे आर लाइक up for the game. They're up for the game. Okay, so we've got the playing 11 now. Wasim, Sri Lankan playing 11 up first. Take us through. Yeah, like Misbah, Shoaib and Moin said, Nishanka, Pereira, Mendes, some Sadida, they got to perform. And then Sri Lanka played really well in the last game, got 100. Mathews, I hope he's ready at time this time. You know, not more than 2 minutes. De Silva needs to fire. He's struggling as well with bat and ball. Then of course, Kururatna. That's the change. That's the change they make. Rajita ke jab Kuratne aa gaya, then Tikshana, Chamira, and the bowler of the World Cup, young general, sensation Madhushanka. Yeah, there you have it. And that's New Zealand. New Zealand, Conway, Ravindra in prime form. Williamson, last match खेले injury के बाद. He's also in good form. Mitchell, he's been scoring runs. Latham, Phillips, Chapman, Santner, Saudi, Ferguson जो आज वापस आए हैं सोडी की जगह, and Bolt. वेल बैलेंस साइड और इनके काफ़ी सारे जो प्लेयर्स हैं वो इन फॉर्म हैं. सिर्फ बैटर्स नहीं, बॉलर्स एज वेल. लेकिन एक जो फोर्स चेंज थी वेयर दे स्ट्रगल इन द लास्ट गेम अगेंस्ट पाकिस्तान वाज सोडी. सो उनकी जगह लुकी फर्गसन आ गए हैं. देयर ऑल द एस्पेक्ट्स कवर्ड. अब अल्लाह ही है कि कोई फेल हो जाए. All aspects covered in that. With that, we're going to take a break here. When we come back, there's more on the other side. Stay with us. Welcome back to the Pavilion. You're watching Sports and the ARY Zap app. The news is that New Zealand have won the toss and have elected to bowl first. Sri Lanka goes into bat. And with that, it's time for your expert predictions brought to you by Express Power. Misbah. Sir, being a Pakistani, ज़ाहिर है पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करेंगे तो श्रीलंका ही बनता है. All right. Wasim? Being a cricket expert, I've got to go what cricket says. I'm very patriotic like you guys, every Pakistani is. But I think after the toss and the way New Zealand looks, New Zealand is my team. Moin? जी समझ गया होगा तुझे. जी. न्यूजीलैंड इतना सीरियस, इतना सिल्वर फॉक्स. गल छोटी करेगा इतनी सीरियस बात तो छोटी है मगर इतनी सीरियस. हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी पाकिस्तानी. लेकिन इतना सीरियस, इतना सीरियस चेहरा. मैंने से कहा गल छोटी करेगा. गल छोटी थी कितनी एनी सीरियस है ना की पाए. हाँ जी सर, बीइंग एन एक्सपर्ट और बीइंग अ पाकिस्तानी की केड़ी एडवाइस चाहिए या केड़ी तेरी प्रेडिक्शन चाहिए? Why are you here sitting on this munch as an expert? न्यूजीलैंड. बस शाम ਨੂੰ मैं पूरी कौम नाल जड़ा ना खुशी मनावांगा ते ਤੁਹਾਨੂੰ मैं देखो. नहीं आप खुशी मना हम भी मनाएंगे. आप पाने दी ਤੁਹਾਡੇ सामने खाना रख देना केड़ी खुशी. So guys, a question now before you say कि अगर पाकिस्तान इंशाल्लाह आज क्वालिफाई करता है तो फिर मोइन का डांस मास्टर. पाकिस्तान still has to win against England with big margin. I forgot that. Yes. All right. And those are your expert predictions brought to you by Express Power. And with that, it's time for the player to watch out for, brought to you by UFone. Press Shoaib. Rachin Ravindra from New Zealand. Yes, Ravindra. Okay. Moin? Lockie Ferguson. Ferguson. Okay. Wasim? It-Bit Gulkand Hathi. I'll go for Conway.
मिसबा मैं ना याद कर ना याद आप भी कर लें एक बिट सदीरा। हाथी तक बात पहुंच गई है, मैं बता रहा हूँ खतरनाक होता जा रहा है हाथी के बाद अब आपकी बारी है मिसबा भाई। हाँ जी, सदीरा सदीरा Sadira. Okay. All right. And it bit Gulkan. Those are your players to watch out for. Thank you, Shoaib. Thank you, Moin. Thank you, Misbah. And thank you, Wasim. दोस्तों आज याद रहे कि बड़ा important दिन है. Nations are born in the hearts of poets. They prosper and die in the hands of politicians. So this is a famous quote by the great Allama Iqbal. And today is Iqbal Day. Wishing everybody all the best. Wishing the best team wins today. And hopefully that would be Sri Lanka. We'll see you at the end of the game.